have about like 8 flavors. नमस्ते एंड कहने वाले काफ़ी लोग ये कहते हैं कि विंटर कैलोरीज़ कभी काउंट नहीं होती है, तो यही सोच के आज मैंने सोचा कि मैं आज आपको यहाँ के एक विंटर की बहुत स्पेशल चीज़ चिमनी केक दिखाती हूँ। वैसे मैंने क्रिसमस पे काफ़ी सारे वीडियोस पहले बनाए हैं जिसमें आप चिमनी केक और मल्ड वाइन का डिस्कशन देख सकते हैं, बट आज मैं बिल्कुल डिटेल में आपको दिखाने वाली हूँ आखिर ये चीज़ क्या है, किस तरीके से बनती है और इसको बनते हुए देखते हैं और क्या हम इसको घर पर बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। सो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वैसे मैं कोई फूड ब्लॉगर तो नहीं हूँ, बट मुझे लगा कि मुझे यूरोप का ये एक ट्रेडिशनल जो फूड है मुझे आपको दिखाना चाहिए। अब ये सिर्फ बुडापेस्ट तक या हंगरी तक लिमिटेड नहीं है, बट ये आप प्राग में या अगर आप वियना साइड जाते हैं, स्लोवेनिया स्लोवाकिया जाते हैं, तो सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप में आपको काफ़ी सारा चिमनी केक मिलता है। अलग अलग नाम से इसको बुलाया जाता है। और आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे चिमनी केक में यूरोप आने के बाद इंटरेस्ट नहीं आया, बट जब मुझे ये पता चला कि सूरत में एक हंगेरियन रेस्टोरेंट खुला और वहाँ पर मेरे फ्रेंड्स ने चिमनी केक खाया है, तब मुझे इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि नहीं यार, अगर सूरत में खुला है और वहाँ लोग ट्राई कर रहे हैं तो मैं यूरोप में हो कि मैंने ट्राई नहीं किया। तो फाइनली मैंने ट्राई किया। ये क्रिसमस मार्केट का एक काफ़ी बड़ा अट्रैक्शन है और लोग एकदम जैसे फेस्टिवल वाइब्स में आ जाते हैं तो वो ज़रूर इंश्योर करते हैं कि वो आएँ, चिमनी केक खाएँ। बहुत अलग अलग फ्लेवर्स में मिलता है। सो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपना चिमनी केक लेते हैं और जानते हैं आखिर लोग कैसे बना रहे हैं। Okay, we have about like 8 flavors. So the simplest, the typical one is vanilla. It's just like sugar and vanilla, and there are coconut, almonds, cocoa, one with chocolate drops. I think that one is like really famous, and also one with walnuts and with cinnamon. I think the most popular ones are cinnamon and vanilla. The cinnamon one, I think it's because it's the most sweetest one, because it has like an extra layer of sugar, and the vanilla is like just, people think that it's the most simple. We should try the traditional one. Yeah. So why do people love it, especially during Christmas? Like, what's the speciality? I think, like, why do people love it in general, or foreigners or Hungarian? In general, yes, and why it's a Christmas attraction? I think it's a Christmas attraction because the chimney cake just has, I think it just reminds everyone that it's Christmas time. And because we don't eat this any other time of the year mostly. Sometimes you can buy it on the street, but I think for Hungarians, so it reminds them of Christmas, and it reminds them of going to these places together, maybe with their families, and buying one. Yeah. हाथ में आ गया है फाइनली चिमनी केक। ये बहुत ज़्यादा गरम खाया जाता है। अब मैंने जो लिया है, मेरी कोकोनट फ्लेवर का चिमनी केक लिया है। ये वाकई बहुत ज़्यादा टेस्टी है। ये सिर्फ बच्चों को नहीं, ये बड़ों को भी बड़ा पसंद आता है। बहुत टेस्टी है वाकई। इसमें ये जो डो होता है, ये बहुत ज़्यादा मीठा डो होता है चिमनी केक का। और जैसे मैंने आपको जैसे दिखाया कि वो रोल करते हैं तब भी वो उसमें शुगर डालते हैं। इसमें बेसिकली जो है वो आइसिंग शुगर डालते हैं
आप इसको घर पे भी बना सकते हैं बिकॉज़ ये प्योरली मैदा है। और जब मैदा में ये लोग शुगर, अंडा और ये सब मिला के जब डो तैयार करते हैं उसके बाद रोल करते हैं और अलग अलग फ्लेवर से इसको डेकोरेट कर देते हैं। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा घर पे बना के। एंड आई रियली होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। जब तक मैं अपना चिमनी केक एंजॉय करूं, आप लोग जो एंड स्क्रीन पे वीडियोस आ रहे हैं क्रिसमस के वो ज़रूर देखिए, एंजॉय करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बाय बाय। Oh wow! For like a whole month. When they were like the honeymoon. Preeti. Pretty like pretty like beautiful. But in my language it's not. But in English, yes. Because how do you write it down? It's like PREETI. So I speak it as ta, not ta, in my own language in Hindi. But if you speak it in English, yes, it's T, so it sounds like, okay, sounds, beautiful. Yeah.